Hello everyone and welcome back to your channel Lawpedia. So first of all, wishing you all a very happy Independence Day and आज के हम अपने स्वतंत्रता दिवस पे समझेंगे Contempt of Courts Act 1971. So before moving forward, समझ लेते हैं कि what all you can expect from the video. So first of all, we'll be discussing what is the act all about. Then we will be going through why is it in news. Then we'll cover certain questions जो आपको पूछने चाहिए when you're understanding the Contempt of Courts Act 1971. Then we'll understand what is Contempt of Court. Then I have also covered certain important sections of the Act. And lastly, we'll be seeing certain case laws. So, the Supreme Court of India held Advocate Prashant Bhushan guilty of criminal contempt over two of his tweets. So basically, Advocate Prashant Bhushan ने two ट्वीट्स किए थे जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको गिल्टी हेल्ड किया है फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट. सो सबसे पहला ट्वीट जो था इट वाज पर्टेनिंग टू अ कमेंटरी ऑन अ पिक्चर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो द ट्वीट वाज ऑल अबाउट CGI राइट्स 50 lakh motorcycle belonging to a particular BJP leader without mask or helmet at a time when he keeps Supreme Court in lockdown mode, denying citizens their fundamental right to access justice. So ये था overall tweet number 1 जो उन्होंने किया था. Now in the next tweet he expressed his opinion on the role of last 4 chief justices of India and उनका क्या रोल रहा है with respect to upholding the democratic institution of India. And अगर मैं brief में tweet number 2 बताऊं तो उन्होंने tweet number 2 में कहा था कि when historians in the future look back at the last 6 years to see how democracy has been destroyed in India even without a formal emergency, they will particularly mark the role of the Supreme Court in destruction and more particularly in the role of the last 4 CGIs. So, उन्होंने इस बात से ये कहा कि आगे आने वाले टाइम में हिस्टोरियंस पास्ट को देखेंगे सो दे विल रियलाइज दैट हाउ सुप्रीम कोर्ट हैज प्लेड अ रोल इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी. सो ये एसेंस आती है आपकी ट्वीट नंबर 2 से. सो ये बेसिकली 2 ट्वीट्स थे जो उन्होंने किए थे जिसकी वजह से उनको हेल्ड किया गया है गिल्टी ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट. नाउ वन ऑफ द मेन क्वेश्चंस जो इस केस में था इट वाज पर्टेनिंग टू वेदर द सेड ट्वीट्स are entitled to protection under Article 19(1), that is freedom of speech and expression of the Constitution as a fair criticism of the system made in good faith in the large public interest or not. So ये one of the main questions था. इसी के basis पे सारे arguments formulate हुए हैं and there are various other questions as well, but this was one of the main questions addressed. किस एक्सटेंट तक आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अलाउ करेंगे एंड किस एक्सटेंट तक इट विल बी अ फेयर क्रिटिसिज्म while upholding the dignity of the Indian judiciary. Now, some of the contentions put forward by the advocate were, or some of the defenses put forward by the advocate were that अगर आप ऐसे tweets को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एम्बिट में ले लेंगी सो इट विल इम्पैक्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड वुड कॉन्स्टिट्यूट एन अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19(1)(a. दैट मीन्स जो आपकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइडेड हैं अंडर 19 क्लॉज 2 उसके एम्बिट से ये बाहर होगा. इट विल बी एन अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. द सेकेंड आर्ग्यूमेंट वाज राइट टू फ्रीली एंड फेयरली डिस्कस द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन is important to build public opinion in order to reform the institution. So उन्होंने ये कहा कि right to freely and fairly discuss. So अगर हम discuss नहीं करेंगे, freely debate नहीं करेंगे, how will we build a public opinion and how will we later reform the institution? मतलब अगर हम उनके disadvantages, merits, demerits discuss नहीं करेंगे एक institution के, public aware नहीं होगी, how will we reform the institution? Then the third argument was Chief Justice is not the Supreme Court of India. So उन्होंने कहा tweet number 1 if you read was directed towards Chief Justice of India. So उन्होंने कहा equating the institution of Chief Justice to the Supreme Court of India is not correct. And if they are not same, how will the statement amount to scandalizing or lowering the authority of the court? So जब statement दी गई थी Chief Justice of India के against and that is a separate institution from the Supreme Court of India, how will the statement be scandalizing or lowering the authority of the court?
Now the fourth argument was mere defamatory attack on the judge is not calculated to interfere with the due course of justice. So अभी हम समझेंगे grounds of criminal contempt. So उन्होंने कहा है उसके stated grounds में कि एक defamatory attack on one of the judges एक इंटरफेरेंस नहीं है विद द ड्यू कोर्स ऑफ जस्टिस एंड वो ड्यू कोर्स ऑफ जस्टिस को इम्पैक्ट नहीं करेगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग द एक्ट और उसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस. सो नाउ वन ऑफ द प्राइमरी क्वेश्चंस जो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, दैट इज व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. सो अंडर योर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 कंटेम्प्ट को दो तरीके में डिफाइन किया गया है. फर्स्ट इज योर सिविल कंटेम्प्ट दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2B. And next is your criminal contempt defined in section 2C. So section 2A of your act states that contempt of court means civil contempt or criminal contempt. Now the civil contempt has been defined as willful disobedience to any judgment, decree, direction, order, writ or other process of a court or willful breach of any undertaking given to a court. So ये है आपकी simple definition for your civil contempt. So now the next is criminal contempt. Criminal contempt basically defined है any publication. वो by words हो सकती है, by it can be spoken, it can be written, it can be by signs or by visual representation that scandalizes or tends to lower the authority of any court or interferes or tends to interfere with the due course of any judicial proceeding. Thirdly, obstructs or tends to obstruct the administration of justice in any other manner. Criminal contempt of court को आप तीन पार्ट में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. It basically means any publication जो कि scandalize करेगी और lower करेगी authority of the court को, या interfere करेगी with the due course of judicial proceeding, or it will obstruct the administration of justice. So ये 3 key points हैं जो कि आपको remember करने चाहिए in case of criminal contempt. Now the next important section is section 12 जो कि बात करता है आपकी punishment की. And section states a contempt of court may be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with a fine which may extend to 2,000 rupees or both. So ये है आपका term of punishment prescribed under the act. However, very important, the section also states that provided that the accused may be discharged or the punishment awarded may be remitted on an apology being made to the satisfaction of the court. So अगर एक accused person court को apology submit करता है and that apology is to the satisfaction of the court, so court accused को discharge कर सकती है and उसकी जो punishment उन्होंने award करी है for the contempt of court उसको भी हटा सकती है. So now the next important question we need to ask while we are understanding Contempt of Courts Act is the source of the power. कहाँ से power मिलती है courts को कि वो contempt के लिए लोगों को charge कर सकते हैं या लोगों को punishment prescribe कर सकते हैं. So mind you, that has been provided in Article 129 of the Indian Constitution. Let us read. So the Article 129 states that Supreme Court to be court of record. The Supreme Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court including the power to punish for contempt of itself. So अगर contempt की powers का source पूछा जाएगा, that will be the Article 129. While आपका Contempt of Courts Act 1971 दिखता है उसका procedure, that means how will the contempt proceeding continue, what is the punishment prescribed for the same. So procedure is the act and the substantial source of power is the Indian Constitution. So now since we are understanding the act, we must know certain important provisions of the act. So now the first important section that you must know is section 5 जो की बात करता है fair criticism of judicial act. That means publishing any fair comment on merits of any case which has been heard and finally decided will not be a contempt. Section 4 क्या बात करता है? Section 4 बात करता है fair and accurate report of judicial proceeding, not a contempt. That means अगर आप fair and accurately judicial proceedings को report करते हैं, that will also not be a contempt of court. Subject to section 7. So section 7 basically बात करता है publication of proceedings in chambers
or in camera, not a contempt except in certain cases. बेसिक लैंग्वेज में ये बात बताता है कि कोई भी प्रोसीडिंग जो इन चेम्बर्स या इन कैमरा हो रही है, अगर आप उसको पब्लिश कर देते हैं या उसके कोई पार्ट्स पब्लिश कर देते हैं, दैट इज नॉट अ कंटेम्प्ट एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस. सो वी नीड टू रिमेंबर दिस, कौन से केसेस में वो कंटेम्प्ट होगा. सो फर्स्टली कि अगर ये पब्लिकेशन कॉन्ट्रेरी है टू द प्रोविजंस ऑफ एनी इनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. सेकेंडली, जब कोर्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी और एक्सरसाइज ऑफ पावर्स वेस्टेड इन इट एक्सप्रेसली प्रोहिबिट कर देता है कि आप ये इंफॉर्मेशन को पब्लिश नहीं करेंगे एंड द इंफॉर्मेशन इज पब्लिश्ड, दैट विल बी हेल्ड एज कंटेम्प्ट. Thirdly, जब कोर्ट फॉर द रीजंस कनेक्टेड विद पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ये कहता है दैट दिस इंफॉर्मेशन विल नॉट बी पब्लिश्ड एंड द इंफॉर्मेशन इज पब्लिश्ड, दैट विल बी ऑल्सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. सो पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट. फोर्थली, जब इंफॉर्मेशन रिलेट करता है सीक्रेट प्रोसेस को, डिस्कवरी और इन्वेंशन को विच इज इन एन इशू इन द प्रोसीडिंग्स, एंड ऐसी कोई इंफॉर्मेशन बाहर पब्लिश हो जाती है, दैट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ कंटेम्प्ट. कमिंग टू योर सेक्शन 13, जो कि बात करता है कंटेम्प्ट नॉट पनिशेबल इन सर्टेन केसेस. एंड सेक्शन 13 बेसिकली ये बताता है कि कोई भी कोर्ट सेंटेंस इम्पोज नहीं करेगा अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 जब तक कि वो सेटिस्फाइड नहीं है दैट द कंटेम्प्ट इज ऑफ द नेचर दैट it substantially interferes with the due course of justice. And secondly, justification by truth एक valid defense हो सकता है for not treating a statement as contempt. Next आते हैं आपके section 15 पे, जो की बात करता है cognizance of criminal contempt in other cases. So in case of criminal contempt, other than the contempt referred to in section 14, Supreme Court और High Court action ले सकता है on its own motion or on the motion made by the Advocate General, firstly, and secondly, any other person with the consent in writing of the Advocate General. And in case of criminal contempt of subordinate court, High Court may take action on reference made to it by subordinate court or on the motion made by the Advocate General. So now let's come to section 16, जो की बात करता है contempt by a judge, मैजिस्ट्रेट और अदर पर्सन एक्टिंग जुडिशियली. सिंपली सेक्शन 16 बहुत ही प्लेन लैंग्वेज में ये बात करता है कि जज, मैजिस्ट्रेट और कोई भी ऐसा पर्सन जो जुडिशियली एक्ट करता है विल ऑल्सो बी लायबल फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ हिज ओन कोर्ट और ऑफ एनी कोर्ट इन द सेम मैनर एज एनी अदर इंडिविजुअल. अगर आप 16 का क्लॉज 2 पढ़ेंगे, इट स्टेट्स दैट कोई भी ऐसा रिमार्क या ऑब्जर्वेशन जो कि दी गई है बाय अ जज, मैजिस्ट्रेट और एनी अदर पर्सन एक्टिंग जुडिशियली रिगार्डिंग दी सबॉर्डिनेट कोर्ट. सो अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट को लेके कोई भी रिमार्क या ऑब्जर्वेशन दी गई है बाय अ जज, मैजिस्ट्रेट और एनी अदर पर्सन एक्टिंग जुडिशियली इन एन अपील और अ रिविजन पेंडिंग बिफोर सच जज, मैजिस्ट्रेट और अदर पर्सन, ये सेक्शन उन पे अप्लाई नहीं होगा. So now after understanding all the aspects of the act, हमने contempt समझ लिया, हमने punishment समझ ली, हमने source of power समझ लिया है. We have also understood some of the key sections of the act. अब हम move करते हैं case laws की तरफ. So in case of शिव शंकर, that is 1988 Supreme Court, कोर्ट ने ये held किया था that criticism of the court that does not impair and hamper the administration of justice cannot be punished as contempt. The next important case जो आप पढ़ सकते हैं will be Contempt Mishra versus the Registrar of Odisha High Court, 1974 Supreme Court. So यहाँ पे कोर्ट ने डिस्कस किया कि how is the criticism different. That means अगर आप जज को एज अ जज क्रिटिसाइज कर रहे हैं और जज को एज अ इंडिविजुअल क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये दोनों चीजें कैसे डिफरेंट हैं. जब आप जज को एज अ जज क्रिटिसाइज करेंगे, दैट मीन्स यू आर डायरेक्टली अटैकिंग द इंस्टीट्यूशन एज वेल. यू आर नॉट ओनली क्रिटिसाइजिंग हिम एज अ इंडिविजुअल और इन अ पर्सनल कैपेसिटी, बट यू आर डायरेक्टली टारगेटिंग द इंस्टीट्यूशन. However, जब आप जज को एज अ इंडिविजुअल क्रिटिसाइज करेंगे या सम ऑफ द कमेंट में भी रिलेटेड टू द
individual or the personal aspect of the judge that may not come under your Contempt of Courts Act 1971. So the next judgment which you can read is relating to your P.N. Duda versus P. Shiv Shankar, 1988 Supreme Court. सो इसकी एक छोटी सी स्टोरी है. इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स ने एक स्पीच दी थी in which there were serious allegations made against Supreme Court that Supreme Court comprise करता है elements from the elite class only, that means from the rich class only, and Supreme Court को sympathy है for the haves only, that means court has sympathy only for those who have money. In spite of these serious allegations, no contempt was held against the person in this particular case. So now, in this particular slide, I have mentioned certain observations जिसके behalf पे Supreme Court ने Advocate Prashant Bhushan को guilty declare किया of criminal contempt. Firstly, जो उनका tweet था which stated that CGI or the Chief Justice of India as the head of the Indian judiciary has kept Supreme Court in lockdown mode and thereby denying citizens their fundamental right to access justice. However, court ने ये observe किया कि even when Supreme Court was in vacation benches properly function कर रहे थे, virtual court hearings हो रही थी. So how can you say that court is in lockdown and thereby it's denying the citizens the right? ये एक बहुत बड़ी statement है जो कि undermine कर सकती है the authenticity or the confidence of public in the judiciary. That means अगर आप कोई भी ऐसी statement एक national platform पे डालेंगे, एक कॉमन मैन या एक कॉमन सिटीजन के दिमाग में ये आ सकता है that the Indian judiciary is not functioning properly and this will hamper the overall confidence or the public faith in judiciary. The second court ने ये कहा कि tweet directed against Supreme Court and the institution of Chief Justice of India. Now अगर आप second tweet को understand करेंगे, that gave an impression that Supreme Court is playing a particular role in destruction of democracy and role played by the Chief Justices of India. So ये directly आप देखेंगे ये directly impact कर रहा है court को. Directly it's against the Supreme Court of India and the Chief Justice of India, and thereby it is not a fair criticism of the functioning of Indian judiciary that is held by the court. Now, एक good faith का aspect भी आता है कि that criticism made in good faith is acceptable. But what is good faith? How will we define good faith? ये भी court ने देखा है इस case में that good faith. So when you're writing such things on a platform which reaches masses and the extent of publication of the platform is very, very large, what kind of good faith can be observed and what is the aspect of good faith इसमें. So ये भी कोर्ट ने कहा है कि Twitter as a platform reaches millions and an advocate practicing also has a lot of impact on the general public. And lastly, कोर्ट ने ये कहा when the advocate is the part of the institution of administration of justice, that means that the advocate is a lawyer practicing for a period of almost 30 years and the person is writing such a statement, how will it ensure trust, faith and confidence of citizens in the judicial system? And court ने ये कहा कि ये बहुत ही important है when we are talking about the functioning of democracy. That means trust, faith and confidence of citizens in the judicial system is very important. So that's it for today's video, and that practically sums up our topic that we had to cover today, which is your Contempt of Courts Act 1971. So I hope this video was helpful and thank you so much for watching. Until then, stay home, stay safe and keep learning.